रिकॉर्डिंग फिर से नहीं स्टार्ट किया, मैं स्टार्ट करता हूँ. ओके, so we are going to draw pxy diagram, pressure xy diagram at constant temperature, and the procedure to do is use equation 3 where total pressure is equal to P2S plus bracket P2S minus P1S into x1. So we need to calculate P1S and P2S, which is essentially the vapor pressure of component 1 and component 2. Then we use or select values of x1 between 0 to 1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1. So you have 10 values. Substitute in this equation 3 and you get total pressure. Okay. Once you total pressure, you need to find the vapor composition in equilibrium with x, right? So we know Dalton's law, P1 bar is equal to Y1 into P, and P2 bar is equal to Y2 into P. And also we know that P1 bar is equal to X1 P1S, right? So combining these two equations, we get what is called Raoult's law. P1 bar is equal to X1 P1S is equal to Y into P. This we have derived before. And from here you get Y1 is equal to X1 P1S upon P. So we know the value of X1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, etc. We know P1S and we know total pressure. So we can find out what is the value of Y1, the composition of the vapor which is in equilibrium with liquid. समझ में आया? Yes, sir. Okay, so the procedure is calculate vapor pressures P1S and P2S using Einstein equation. Then calculate total pressure using this equation 3. Then calculate vapor composition using equation 5. Right? And then once you have this pressure x1 and y1 values, you can plot pxy diagram. Any doubts on how to draw the pxy diagram? आता है बहुत बार एग्जाम में ये. Einstein equation दिया रहेगा. You have to calculate the vapor pressures of component 1 and component 2. Assume values of x between 0 to 1. Calculate total pressure and calculate y1. सर वैल्यू x की वैल्यू कौन सी भी ले सकते क्या 0 to 1 में? 0 to 1 में कुछ भी ले सकते, but we generally take 0, 0.1, 0.2. It's easier to handle it. 0.11, 0.12, 0.15 लेने से. And you need even distribution. You need enough points to draw the curve because curve change होता है. It's not a straight line, right? So you need enough points to draw a smooth curve through it. So that's why we select 10 points, 11 points rather, from 0 to 1. So normally you take 0, 0.1, 0.2, 0.3 up to 1. Okay. Next is construction of TXY diagram. That's temperature XY diagram. We have seen both TXY and PXY, right? So temperature XY diagram के लिए pressure is constant. This is little bit more difficult because यहाँ पर हमारे को Einstein equation क्या रहता है? How do you calculate the pressure? Einstein equation याद है किसी को? Lava of P equal to A minus P upon T plus C. Right. So you can calculate vapor pressure for a given temperature. Right? Temperature पता होना चाहिए, then you can calculate the vapor pressure, right? But यहाँ पर क्या है? Temperature is unknown, pressure is constant, right? So we have to assume a temperature, just like हमने assume किया between 0 to 1 x, right? 0 to 1 के range में x1 का assume किया value. Similarly, we have to assume a temperature between the boiling point of pure liquids 1 and 2. हमने देखा था, right? The two extremes are boiling point of A and 1 and 2. याद आ रहा है किसी को? The TXY diagram. Yes, sir. If you look at TXY diagram, so this is a TXY diagram, and if you look at this one, this is the boiling point of pure A,
This is the boiling point of pure B. So all the temperatures are going to lie between the boiling point of pure A and pure B. That is the range of temperatures. The curve here, it is between those two temperatures. Right? So we assume a temperature between the boiling point of A and boiling point of B, and then calculate the vapor pressure for that temperature. So when we are where we are assuming temperatures between boiling point of A and boiling point of B. Yes, sir. Okay. So then, so that's the range of temperatures. So temperature assume किया हमने, and temperature you assume a whole number, right? 0.1 में नहीं करता है, जैसे suppose it is between 70 and 80. So we take 10, 10, 10 का interval में लेंगे. Depends on कितना range है. If the range is small, then you take more. 8-10 point रहना चाहिए. Objective is that we should avoid 8 to 10 points between the two boiling points. Okay. Then calculate the vapor pressure of pure liquids, pure component 1 and component 2 at these temperatures using Antoine equation. So P1s and P2s मिल जाएगा हमारे को. Right. So then you use equation 3 जो हमने पहले derive किया था total pressure के लिए. We know the pressure. Pressure is given, right? In this case, pressure is given. Constant जो है. So we know the pressure. So from the equation 3, we know pressure, we know P2s, we know P1s, so we can find out x1. ये आया नहीं है, P1 है. Okay. So from equation 3, we know P1s, P2s, and P. We can find out the value of x1. And once you know the value of x1, we can find out the value of y1 using equation 5. So now we know the temperatures. We have assumed temperatures, and we know the value of x1 and we know the value of y1. We can plot temperature xy diagram. Any questions on how to plot pressure xy diagram and temperature xy diagram? Okay, so if there are no questions, let us proceed to third diagram, which is xy diagram or equilibrium diagram, right? And we can prepare it from the txy diagram. txy diagram लिया हमने. We know this is txy temperature xy diagram, and we know that any tie line is essentially a vapor and liquid in equilibrium, right? Because in the txy diagram, this is a ty curve and this is a tx curve. If you draw any tie line between the vapor and liquid, what you'll get is x and y values, right? ये vertical line actually थोड़ा vertical नहीं दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, but it's vertical line. So you draw vertical line from say point P and Q. Okay. So if you draw, this is ty, that means this is the y value. This should give the y value, and this should give the x value. So we draw a vertical line from here and to the diagonal, and then take a left line, draw a horizontal line. That should give us a y value. Or P say vertical line draw किया, that is the x value. So this point is a point on the equilibrium diagram. Any questions on how to get the equilibrium diagram from txy diagram? सर लेकिन एक पॉइंट से नहीं होगा ना वो, हमें बहुत टाई लाइन. Each tie line is one point on the equilibrium diagram. ये बताया था पहले मैंने. पहले बताया था any point, any tie line is one horizontal line on the txy diagram, and there are two ends to it. One point is on the ty curve, which gives the vapor composition,
and one point is on the Tx curve, which gives the liquid composition, right? Liquid composition डायरेक्टली मिल जाएगा because हमारा x axis में क्या है, it is only xy, right? So directly हमने ड्रॉ किया लाइन यहाँ पर, तो हमारे x मिल जाएगा p का, that's what we have got done here, right? This is x value, x value मिल गया हमारे को, और y value के लिए हमारे को, because y is on the y axis, right? We cannot just take a vertical line. So vertical line goes to equilibrium diagram पे, diagonal पे x is equal to y. On the diagonal of equilibrium diagram, because it is diagonal line from 0 to 1, it is x equal to y. So basically we are converting from x axis to y axis. So take a vertical line from the ty diagram to the diagonal line, and then take a horizontal line to the y axis. Is this understood? Yes, sir. So now you know how to draw the pressure XY diagram, temperature XY diagram, and XY diagram or equilibrium curve. Okay, so there's what you have seen. There's another method which we'll see now. This is called the approximate method of equilibrium diagram. So we assume that the ratio of vapor pressures of pure components is independent of temperature. So what vapor pressure we calculate by internal equation P1s and P2s. The ratio of these two, that is called alpha, is equal to P1s upon P2s is equal to constant, and it's not a function of temperature. That's what we have to assume. That's why it is called an approximate method. The assumption is not true for many situations, but it is an approximation. We can use it for calculation at lower pressures. Higher pressures पे फर्क पड़ता है. Okay. So this is called, alpha is called relative volatility. कभी सुना है नाम relative volatility? Have you heard of this thing? Come. Yes, no, don't know. No response. Hi. सुना है कभी? Yes. Relative volatility. Sir. Where have you heard it? ठीक है, नहीं सुना है तो ठीक है. So let us proceed. It is nothing but ratio of vapor pressure of component 1. सुना है सर. डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन कहाँ देखा था? डिस्टिलेशन हुआ है क्या आपका? मैंने सर. फिर नहीं वो कोर्स था ना ऑनलाइन कोर्स में. अच्छा ठीक है. So alpha is nothing but ratio of vapor pressure of component 1 divided by vapor pressure of component 2. So component 1 is always more volatile component, and component 2 is less volatile component. Remember that. And that is what called it relative volatility. कितना ज़्यादा volatile है एक component related to another component. And we know that from Raoult's law, y1 is equal to x1 p1s upon p, and y2 is equal to x2 p2s upon p. So if you substitute in this equation for alpha, ये equation में p1s और p2s डाला हमने. Sorry, we take ratio of y1 to y2. So y1 upon y2 will be equal to x1 p1s upon p divided by x2 p2s upon p. p cancel हो जाएगा. What you get is x1 p1s upon x2 p2s. And we know that y2 is nothing but 1 minus y1 for a binary system. So y1 upon 1 minus y1 is equal to x1 upon x2 is 1 minus x1 into p1s upon p2s. Right? And we know that p1s upon p2s is nothing but alpha. So that is equal to alpha into x1 upon 1 minus x1. Okay. So we
cross multiply these terms, and what you get is y1 into 1 minus x1 is equal to alpha into 1 minus y1 into x1, and open these terms. इसे ओपन करने के बाद हमारे को इक्वेशन 6 मिल जाएगा. यहाँ पर दिखाया आपको पूरा rearrangement कैसे होता है. So we're basically taking y1 terms into one side and x1 terms into another side. So all the y1 terms are on this side and x1 terms on the other side, because we want to find out y1 from x1. तो y1 एक साइड में ले लिया सब हमने और x1 एक साइड में आ जाएगा. So what we get is y1 is equal to alpha into x1 upon 1 plus alpha minus 1 into x1. So this is the equation for calculating y1 from x1. Okay, and alpha का वैल्यू क्या रहेगा? अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा? रेंज क्या रहेगा? Because denominator alpha minus 1 दिया है, right? So is there restriction on alpha? Greater than 1. Greater than 1. It will be greater than 1. Why it will be greater than 1? वो सेपरेट होना चाहिए ना. हाँ, separate होना चाहिए, but if you look at this equation for definition of alpha, alpha is nothing but P1s upon P2s. The vapor pressure of component 1, more volatile component, is always more than the vapor pressure of component 2. That's why it is more volatile component. देखा था हमने, right? Vapor pressure of component Yes. 1 is always Yes. more than that of component 2. That's why it is more volatile component. So alpha is always going to be greater than 1. Okay. So once you get this equation, you can assume values of x1 between 0 to 1, again 0, 0.1, 0.2, etc. 10, 11 points. Calculate P1s and P2s using Antoine equation for a given temperature, because XY diagram is for a given temperature, right? And then once you get P1s, P2s, we can calculate alpha, and then use equation 6 to calculate y1, because we know x1, we know alpha, we can calculate y1. Then you can plot y1 versus x1 equilibrium diagram. Any questions on how to draw these three diagrams? आता है एग्जाम में ये बहुत बार. सर एबीसी वैल्यूज गिवन होंगे ना एंटोनी के? किसके? एबीसी ABC एंटोनीज इक्वेशन. Antoine equation is given. Without that, you cannot solve this. You cannot draw this curve. Okay. So in that case, we have some examples in the book. आप solve करेंगे कि देखेंगे क्या करेंगे? How do you want to do it? Because I see that जो मैंने प्रॉब्लम दिया था एग्जाम में, लोगों ने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया बुक से without understanding it. Only 2 or 3 students have really understood it, which I can guess because it's not a pure copy of what is there in the book. So how do you want to solve problems? You want to solve the problems actually जैसे क्लास में करते हैं? I want response. I can show you the solution. Solution दिखाना बहुत easy है, बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. Yes, sir. Solve. Please solve. All correct. So let's see if I can give you the problem, because I see that you are having problems in solving numericals.
Okay, so let's see. So can you see this problem? Yes, sir. Okay. So example 8.6 is an heptane and toluene form ideal solution. At 373 Kelvin, the vapor pressures are 106 and 74 kPa respectively. Determine the composition of liquid and vapor in equilibrium at 373 Kelvin and 101.3 kilopascal. Okay, this is only one calculation, 1 point. ठीक है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, फाइंड आउट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इन इक्विलिब्रियम. डू इट. खुद करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे आई कैन शो यू द सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम नहीं है कुछ. समझ में आया कैसे करने का है? कैसे करेंगे देवेंद्र? सर रेऑल्ट्स लॉ यूज कर, हाँ, रेऑल्ट्स लॉ यूज करके. राउल्ट्स लॉ, रेऑल्ट्स नहीं, राउल्ट्स लॉ. ओके, रेऑल्ट्स लॉ. ओके. सो P1S दिया है, P2S दिया है, प्रेशर दिया है टोटल, राइट? तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम? x1 y1 x2 x1 y2. निकाल सकते हैं, राइट? वी कैन फाइंड आउट x1. वो हाँ, इक्वेशन दिया है, P is equal to P2S plus P2S minus P1S into x1, राइट? तो प्रेशर पता है, P2S पता है, P1S पता है, वी कैन फाइंड आउट x1. x1 मिला तो देन वी कैन यूज राउल्ट्स लॉ टू फाइंड आउट y1. डू इट. इट्स जस्ट 1 मिनट कैलकुलेशन. ये भी एकदम बेसिक है. लेट्स सी हु कैन डू इट. चॉकलेट नहीं है यहाँ पर, बट आई कैन गिव यू अप्रिसिएशन. फटाफट करने का. इट्स जस्ट 1 मिनट कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है इसमें. There is nothing to it. It's just one calculation of PXY diagram or TXY diagram. हो गया? What is the value of x1? 0.85. 0.853. Okay, find out y1 then. Once you know the value of x1, you can find out y1 or y based on Raoult's law. So 3 decimals calculate करने का, because measurement is percentage wise convert किया तो 85.3 होता है. So what is the value of y?
0.8925. गुड। किसने किया था ये? किसका था आवाज? हुआ इट? Niranjan here. निरंजन। ओके गुड। और किसका हो गया? जस्ट 1 मिनट कैलकुलेशन, ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। कर रहे कि नहीं कर रहे लोग? दीक्षिता? हो गया सर। क्या तो बोलो ना। आई नीड सी अल्टीमेटली, जैसे क्लास में होता है, आई वॉक अराउंड एंड सी हु हैज डन इट, हु हैज नॉट डन इट, राइट? आई नीड टू नो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम हियर। आई कैन जस्ट शो यू द सॉल्यूशन एंड दैट विल बी ओके। और किसने किया है? गिव मी द नेम्स। Nobody has done it. किया सर। हेलो, देवेंद्र। देवेंद्र किया है, ओके। और किसने किया है? नाम बताओ। आई वांट टू नो हु इज एक्चुअली सीरियस अबाउट दिस थिंग। सर मेरा 0.889 आ रहा है, गलती है क्या? एक्स कितना आया? 0.85। 853। 3 डेसिमल लेने का मैं बोला था। ओके सर। डोंट राउंड ऑफ टू मच। मैं पहले बोला टेक 3 डेसिमल प्लेसेस देन यू गेट करेक्ट 85.3%। 4 डेसिमल भी लिया तो चलेगा। डोंट टेक 2 डेसिमल्स। राउंड ऑफ करोगे थर्मो में तो रॉन्ग आंसर आएगा। 11 डेसिमल लेना है, 10 डेसिमल लेने का 3 to 4 डेसिमल ले सकते हैं हम, बिकॉज कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम। आया सर 0.8925। The more you round off, the more there will be error. कंपोजिशन है तो 85.3%, 85.29% ऐसा आएगा करीब। ओके। और किसने किया? सर प्रतीक्षा मौर्य। हाँ, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। और सिद्धि किया गया? यस सर। तो बोलो ना, नाम बोलो ना। नुपुर किया? सर श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा। गुड। नुपुर किया गया? नुपुर, आर यू देयर? इज शी देयर और नॉट देयर? आई डोंट नो। कुछ नाम पता है इसलिए मैं नाम लेता हूँ, और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स टू इट। अभिषेक हुआ क्या? सर भूमिका। भूमिका हो गया। नुपुर हुआ क्या? नुपुर इज एब्सेंट। Okay, let's move to this next problem. 8.7. Solve problem हेलो है। सर, एक डाउट। हाँ, हेलो बोलो। सर, बोलो। यहाँ पे सिर्फ हमें मोर वोलेटाइल का ही निकालना पड़ता है क्या हमेशा? मतलब इधर कैसे मेंशन नहीं किया कि हेप्टेन का निकाल? तो See, हम जो प्लॉट करते हैं पी एक्स वाई डायग्राम, टी एक्स वाई डायग्राम, किसके लिए प्लॉट करते हैं? मोर वोलेटाइल के लिए। Always more volatile. It is a binary system, right? If I know the composition of more volatile component, don't I know the composition of the less volatile component? यस सर, मतलब अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ टोल्यूइन का निकाला होता तो भी चलता क्या? मतलब या हेप्टेन का निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वो मोर वोलेटाइल है? मेरा पहला क्वेश्चन क्या था? टी एक्स वाई डायग्राम में व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई? इज इट मोर volatile or less volatile component? फॉर मोर वोलेटाइल। You always draw more volatile component because you always want to separate out more volatile component. Separation always more volatile का होता है. That's why everything is for more volatile component. जितने भी diagram मैंने बनाया, it is always for more volatile component. जो distillation में ऊपर जो आता है, product जो आता है, that is more volatile. समझ में आया? हाँ सर।
Okay, so solve the example 8.7. It is also very simple. An equimolar solution of benzene and toluene is totally evaporated at constant temperature of 363 Kelvin. At this temperature, the vapor pressure of benzene and toluene are given. What are the pressures at the beginning and end of the vaporization process? समझ में आया कैसे करने का? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन टोलिन यानी क्या हो गया? When you say equimolar mixture of benzene and toluene, what does it mean? x1 equal to x2. Yes. x1 equal to x2, and what is the value of x1? 0.5. 0.5, right? Because total is 1. So composition is given as 0.5, x is given as 0.5, right? बराबर. So you know the pressure दिया है कि नहीं दिया है? Is the total pressure given? नहीं दिया. P1s दिया है, P2s दिया है. P1s P2s दिया है कि नहीं? Yes, sir. So x1 is given, right? x1 is 0.5, P1s is given, P2s is given. What can we calculate? P. Calculate total pressure. So calculate total pressure. You can calculate total pressure because P1s P2s is given and x1 is given. So calculate P first. What is the value of pressure? $94.7. 94.7 kilopascals. 94.7. Okay. So once you get the P value, what we can do now? You know x1, right? You know P. What can you find out? Sir, Y1. Y1. Yes, find out Y1. Y1 sir 0.7148. Okay. But अब अपने क्या निकालने का है? Pressures at the beginning and end of vaporization process, right? So P equal to 94.7 is there at the beginning of vaporization, right? 0.5 बोला था. That is the liquid composition, right? Liquid composition is given as 0.5 benzene, 0.5 toluene. बराबर. एंड ऑफ वेपराइजेशन के लिए एक इक्वेशन दूसरा डिराइव करना पड़ेगा, किया नहीं है मैंने. सो लेट अस लीव दिस प्रॉब्लम फॉर नाउ. आई विल डू दैट डेरिवेशन टुमारो एंड देन वी कैन सॉल्व इट. ओके, नाउ यू कैन नॉट सॉल्व इट. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये बाद में करेंगे, कल करेंगे 8.7. A mixture of A and B conforms closely to Raoult's law. The pure component vapor pressures PAS and PBS are given by these two equations, which are Antoine equations. If the bubble point of a certain mixture of A and B is 349 Kelvin at a pressure of 80 kPa, find the composition of the first vapor that forms.
ठीक है। सो क्या करने का अपने को, कंपोजिशन दिया है, नहीं दिया है, राइट। प्रेशर दिया है, इज द प्रेशर गिवन, Yes. प्रेशर इज गिवन, वेपर प्रेशर इज गिवन, टेम्परेचर दिया है क्या? हाँ. Yes, sir. So for that temperature, can you find the vapor pressure of A and B? Temperature is how much? Yeah, दिखा रही है. Okay. So calculate vapor pressure at 349 Kelvin. Equation दिया है, temperature पता है अपने को 349 Kelvin. Find out what is PAS and PBS. PA 4.4533. हाँ, पहले का वेपर प्रेशर 4.4533. 4 point? No way. Wrong है. प्रेशर निकालना है, एलन प्रेशर नहीं निकालना है. इक्वेशन क्या है? 85.9. हाँ, 85.91 समथिंग आएगा, राइट. एलन 85.912. हाँ, एंड एलन पीबीएस दिया रहेगा, तो पीबीएस कितना आएगा? $43.31. Okay, so now you know PAS and PBS, right? So what can you find out from here? Liquid composition. Yes, so find out liquid composition. Pressure दिया है हमारे को, टोटल प्रेशर दिया है क्या? How much is total pressure? Yes, sir. 80 80. So 80 kilopascal. total pressure is given, PAS is given, PBS is given. Find out what is the composition of the liquid. $0.8613. Okay, so x1 मिल गया, right? xa मिल गया अपने को, तो हम we can find out ya. राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके ya फाइंड करो, वेपर कंपोजिशन. What is the value of ya? क्या हो गया, ya का वैल्यू नहीं आ रहा क्या? Sir, 0.9248. Okay, so now you know how to calculate 0.9248. the bubble point, right? क्वेश्चन क्या था?
The bubble point of certain mixture of A and B at is to 349 at a pressure of 80 kPa. Find the composition of the first vapor that formed, right? बबल पॉइंट पे वेपर कंपोजिशन निकाला हमने, x का x निकाला और वेपर निकाला. So x is 0.86, y is 0.92 something, right? So y is always going to be more than x. Sir, Yeah. the composition of the first vapor, how is it so much? 92. लिक्विड कंपोजिशन कितना है फर्स्ट, लिक्विड कंपोजिशन कितना है एट बबल पॉइंट? 86. So आपने देखा था जो हमने y x डायग्राम देखा था, राइट? वी हैव सीन दिस y x डायग्राम, इफ यू रिमेंबर दैट. y x डायग्राम दिख रहा है आपको? Yes, sir. So if I take any value of x here, 0.86 लिया हमने सपोज, राइट? 0.86 यहाँ पर लिया सपोज, राइट? And this is at this point it is x equal to y, right? So this is 0.86. तो ये कितना हो जाएगा y? Will it be less than 0.86 or more than 86? More. It will always be more. That is why, that is the principle of distillation, right? The vapor composition is always more than the liquid composition for the more volatile component. Remember that. More volatile component, because the vapor pressure is more, the boiling point is less. It will have always, vapor will have more of more volatile component. तो इसीलिए सेपरेशन होता है. अगर ये मैंने वेपर को कंडेंस किया यहाँ पर लेके, तो आई विल गेट अ लिक्विड. कंडेंस किया तो मेरे को मिलेगा लिक्विड विच हैज more volatile component around 0.92. That means if I take a liquid of 86% more volatile component and evaporate it, तो जो वेपर बनेगा that will have 92% more volatile component. So if I condense the vapor in a condenser, I'll get a liquid which is richer in the more volatile component. समझ में आ रहा है? Yes, sir. That is the principle of distillation. That is how we can get separate more volatile component from less volatile component, right? हमने evaporate किया liquid को, जो vapor बनेगा it has more volatile component. Condense किया उसको vapor को, so I will get another liquid after condensation which will be having more of more volatile component. So I get separation of more volatile component from less volatile component. नीचे जो रहेगा liquid में, उसमें यहाँ पर less volatile component ज़्यादा रहेगा, वेपर जो रहेगा उसमें लेस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा. सो दैट्स हाउ वी सेपरेट लेस वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट. इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. So let's see, let's solve another problem. ठीक है, ये हो गया दिस. So simple thing. Now we'll go to little more complex thing. 8.9. The vapor pressures of acetone and acetonitrile are evaluated by Anton equations. Right? Now we have 3-4 parts of it, where T is in Kelvin and P is in kilopascal. Remember, Anton equations में कभी कभी temperature is given in centigrade. तो उसमें क्या constants का value change हो जाता है A, B, C का. So always pay attention to units. Anton equation किस units में दिया गया है? Because कभी कभी centigrade में देते हैं mislead करने के लिए, and you get totally absurd values of vapor pressure if you use Kelvin instead of centigrade. So pay attention to units. Okay. Assuming that the solutions found by these are ideal, again ideal assume कर रहे हैं हम. Calculate x1 y1
at 327 Kelvin and 65 kPa. राइट. सो टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, x1 और y1 निकालने का, सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन नाउ, राइट. सो दैट at 327 calculate the vapor pressure of P1s and P2s, and pressure is given P 65 kPa, so you can find out x1 at that pressure. Once you get x1 you can find out y1. जस्ट अभी जो किया एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम है, करो. समझ में आया? यस सर. और ये प्रॉब्लम इन सेम में आ चुका है एक बार, सिमिलर प्रॉब्लम, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर प्रॉब्लम. 8.9 का सिमिलर प्रॉब्लम आ चुका है एक बार इन सेम में. Find out P1s, P2s. What is the value of P1s and P2s? 85.119995. And P2s? 39.30. Okay. So once you get P1s and P2s, you can find out what we can find out now. XI. Yes. So find out x1. सब लोग करो, जितना करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना आपको समझ में आएगा. सॉल्व प्रॉब्लम है बुक का, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिफर करने का, एक्चुअली खुद करने पर ही समझ में आता है. अदरवाइज रीडिंग द सॉल्यूशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. इसके बाद अनसॉल्व प्रॉब्लम करेंगे तब पता चलेगा क्या कितना समझ में आया आपको. What is the value of x1? Zero 0.56 sir. ज़्यादा डेसिमल करने का मैंने पहले बोला था, डोंट राउंड ऑफ. 0.56 समथिंग समथिंग. कंपोजिशन है 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस निकालना चाहिए. 0.856 समथिंग समथिंग आना चाहिए. हो गया x1. Then find out y1. Sir, x1 is 0.5608. Okay, what is y1? 5. 0.7377 sir. Y1. 0.7344 आना चाहिए. तो राउंड ऑफ नहीं करने का, इसमें मतलब x1 को राउंड ऑफ करोगे तो y भी राउंड ऑफ हो जाएगा. P1s P2s भी राउंड ऑफ करोगे तो राउंड ऑफ हो जाएगा. See, that's what डेसिमल प्लेसेस प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल थर्मो. ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, 5 6 नहीं चाहिए. 3 4 डेसिमल प्लेसेस इनफ. वेपर प्रेशर के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस इनफ. ओके, ठीक है. सो ये एक पार्ट हो गया. देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ इट वील डू टुमारो. आई वाज लुकिंग एट द असाइनमेंट. किसने सबमिट नहीं किया अभी तक असाइनमेंट? इट वाज ड्यू ऑन मंडे, आज थर्सडे हो गया. Assignments are going to have a lot of weightage in your marks this time. So if you are not submitted, I can see names here: Abhijit Patil, Abhishek Ingde,
अभिषेक कुंबाड़े, आकाश वाघमारे, आशीष काकड़े, चैतन्य शेलार, दीप पटेल, दिग्विजय सिंह चौहान, केतन पाटिल, परेश चौधरी, प्रियंका गराड़े, रितेश कुमार कोल्हापुरे, सैफ हनूरे, साक्षी देशमाने, श्लोक फुलकर, सूरज बांदल not submitted. 45 students have submitted, 16 have not yet submitted. If you don't submit, you're going to get 0 marks. Then don't complain at the end कि marks कम क्यों मिले आपको. Submit किया उनका right है कि wrong है, that's a separate thing. I'll see that. But submit भी नहीं किया तो 0 ही मिलने वाला है. आपको डेडलाइन दिया गया था, एक 2 क्वेश्चन ही करने थे everybody supposed to solve only 2 questions. Unit 1 का एक क्वेश्चन, Unit 2 का एक क्वेश्चन. आज तक करो, मैं कल आज रात को करेक्शन करने वाला हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूँगा किसी का. और आगे से जो डेडलाइन दिया वो डेडलाइन में ही सबमिट करने का. इज दैट अंडरस्टूड? जिसका नाम लिया मैंने उनको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? रितेश कोल्हापुर, आर यू देयर? नहीं है, एब्सेंट भी है. अभिषेक कुंबाड़े, यस सर, सबमिट करता हूँ आज. करो सब जिनका नाम लिया है, नहीं तो 0 मिलने वाला है. और बाद में मार्क्स में क्या इम्पैक्ट होने वाला, यू नो, इट्स गोइंग टू काउंट अ लॉट दिस ईयर, अटेंडेंस एंड असाइनमेंट्स एंड टेस्ट्स. So pay attention, otherwise you Yes, sir. depend on. सर हेलो. Yeah, सर वो रितेश के घर में प्रॉब्लम हुआ है इसलिए वो नहीं, उसने बताया था मुझे. okay, ठीक है. प्रॉब्लम हो गया तो आई कैन अंडरस्टैंड इट. प्रॉब्लम है तो आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट उसको बोला असाइनमेंट सबमिट करो. असाइनमेंट नहीं सबमिट कर सकते हो. हाँ सर, हेल्थ इशू है उसके घर में इसलिए वो आ नहीं रहा. ओके, ठीक है.